Hello everyone, welcome to Unacademy and welcome to this very special class with English vocabulary. तो आज हम let's just kind of pick up from all that we've learned till now. अभी तक हमने जो भी vocabulary के अलग अलग hits किए हैं उनको pick up करते हैं and let's go through a small test of sorts. एक रैपिड टाइप का टेस्ट करते हैं ताकि तुमको ये रिफ्लेक्ट कर सको कि बेसिकली तुमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, कितना तुम्हें याद है या फिर ओवरऑल तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन कितना इंप्रूव हो गया है, बिकॉज हम सारी की सारी वोकैबुलरी एज फार एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू कीप इट इन कॉन्टेक्स्ट ताकि तुमको किसी लेवल के ऊपर अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को यूज करने की जरूरत पड़े. ऑलराइट, सो लेट्स begin, but before that I have a couple of messages for you. Telegram का चैनल ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, so that you get a place where you can download your classroom homework notes from. इसके अलावा स्पेशल क्लासेस का शेड्यूल भी तुमको उसके ऊपर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, तो you will kind of be close to that schedule. Okay, so we've been having sessions on YouTube for a while and now you very thoroughly understand what is good about it and what makes it so compatible, so flexible, so suited to your particular needs. बट देन अगर तुमने स्पेशल क्लास का एक्सपीरियंस किया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, यू विल नो दैट दीज फीचर्स गेट enhanced and there are a couple more features that make it truly beneficial and truly rewarding, and those are like, because it's a smaller group of people, I can have elaborate discussions with them. They can ask cross questions. I can know the general opinion of the class. उससे मैं किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहता हूँ. I can decide क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया. You can raise hands, you can download lecture notes right away. So ये सारे फीचर्स जो हैं that make it the special class very very truly special. And अगर अभी तक experience नहीं किया तो please make sure that you experience the special class right now. Use one of my codes AA001 and this will get you into your very first special class absolutely free. अगर अभी तक कोई स्पेशल क्लास नहीं लिया तो ये वाला कोड तुमको बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लास का एक्सेस दे देगा, योर वेरी फर्स्ट स्पेशल क्लास. उसके बाद आती है बात सब्सक्रिप्शन की. तो नाउ यू हैव अनदर ऑप्शन which is called the CLAT iconic program, and basically it is nothing but where you get individual attention from your educators. So one of the educators of every subject is going to get in contact with you. They're going to help you make your schedule. They're going to help you clarify your doubts, solve your problems, and like आगे का जो रास्ता होगा तो काफी स्मूथ हो जाएगा, because he or she will be holding hands with you. इस तरह का एक डिस्क्रिप्शन अगर तुम देखना चाहो तो 3 month का प्रोग्राम अगर लेते हो तो यू गेट 18 सच सेशंस. 6 महीने का अगर प्रोग्राम लेते हो तो यू गेट 36 सच सेशंस. प्राइसिंग के बारे में बात करें, ऑन द लेफ्ट यू हैव द आइकॉनिक प्रोग्राम, ऑन द राइट यू हैव द प्लस प्रोग्राम. तुम ध्यान दे पा रहे होगे शायद कि तुम जितना बड़ा ज़्यादा मंथ्स एक बार में बाय करोगे तुम्हारा मंथली कॉस्ट जो है वो नीचे चला जाएगा. आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट अगेंस्ट बाइंग 1 month एट अ टाइम. एक बार में 1 month नेटफ्लिक्स की तरह मत करना, अदरवाइज यू विल बी एंडिंग up paying a lot of money, 3 times the amount of money. अब तुम देख पा रहे होगे आइकॉनिक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट देन दैट इज बिकॉज जो मेंटर अटेंशन है दैट इज गोइंग टू बी इंडिविजुअल एंड इट्स गोइंग टू बी डायरेक्ट. जो क्लासरूम में जो सीधे सीधे एजुकेटर से, फैकल्टी से, टीचर से बात करना जो थोड़ा बहुत मिस कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है. सो वंस यू मेड अप योर माइंड, please go for one of these subscription packages. You remember my code again, that is on the right of your screen, the very right edge of the screen in yellow you can see AA001. This will get you a 10% discount on any of the subscription package you're about to buy. तो तुम जो भी खरीदना चाहो प्लीज ये कोड मत भूल जाना, बिकॉज वो 10% डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें इसकी वजह से. ऑलराइट गाइज, 1 Feb से पहले अगर अपना डिसीजन ले लिया है तो गो अहेड एंड मेक द ट्रांजैक्शन हैपन, बिकॉज 1 Feb से ये सारे के सारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे. सो द प्राइसेस दैट आई जस्ट शोड, they're going to be revised from 1 Feb. So उससे पहले make your decision, and if you made your decision, go for the subscription package. बेवजह में आप डिले मत करो, otherwise you're going to regret later. बाद में बहुत बुरा लगेगा तुमको. ओके, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, मतलब आई हैव ट्राइड टू सॉल्व ऑल द डाउट्स. अगर इसके अलावा भी तुमको देयर समथिंग दैट यू नीड टू गेट क्लियर्ड अप, कॉल दिस नंबर 8446723292 at these like in and during these timings 10 AM to 7 PM Monday to Saturday. इनको कॉल करो, अपने सारे के सारे डाउट्स जो इनसे पूछो, एंड देन ओनली देन गो अहेड विद योर सब्सक्रिप्शन पैकेज वंस सेटिस्फाइड. ऑल इंडिया मेगा क्लैट मॉक टेस्ट है, याद रखना इसको. इट इज़ ऑन द 30th of January. इस तरह के कोई भी टेस्ट जो है यू शुड अप्रोच इट वेरी अग्रेसिवली. देखो, मैं कई बार बात कर चुका हूँ, और अगर अभी तक तुम्हारे तक कान तक बात नहीं पहुंची है तो मॉक्स को सिर्फ अपने को टेस्ट करने के लिए यूज़ मत करो. दैट इज़ ओनली 10-15% ऑफ द मॉक दैट यू आर यूजिंग.
इट्स बेसिकली अ वेस्ट ऑफ दैट मॉक। उस मॉक में तुम्हें ज़्यादा बड़ा लालच ये होना चाहिए कि ठीक है, स्कोर जैसा भी आ रहा है, मुझे वो सेट ऑफ क्वेश्चंस में घर लेके आऊँ, फिर उन क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा डीपली एनालाइज करूँ कि उनका एक एक क्वेश्चन का उसका रीजनिंग मुझे समझ में आता है। सो मच सो दैट कि अगर तुमने 10 मॉक दे चुके हो अभी तक, सो 150 इंटू 10 इज 1500 क्वेश्चन। मैं तुम्हें रात में भी उठा के अगर पूछ लूँ तो उन 1500 क्वेश्चन का एनालिसिस तुमने कर लिया होना चाहिए, एंड ओनली देन कैन यू से यू आर सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन। अदरवाइज तुम अगर सिर्फ इधर से उधर ठोकरे खा रहे हो, कुछ हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, कभी कुछ रैंडम से उठा के कुछ पढ़ लेते हो, दैट इज नॉट सीरियस एफर्ट। सीरियस एफर्ट तो जब तुम लगाओगे व्हेन तुम रेगुलरली इस तरह के मॉक्स दे रहे होगे, और इरिस्पेक्टिव तुम कितने उस मॉक में कितना स्कोर कर रहे हो, यू कीप learning through those mocks by solving those questions and getting the reasoning established कि तुम किस particular reasoning से तुमने एक individual और इन एवरी इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व किया। तो चलो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। मेन मुद्दा क्या था आज हमारा? दिस इज अ वर्बल वर्कआउट मैशअप, एंड मैं तुम्हारे पास बहुत अलग अलग टाइप से, अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग चैलेंजिंग सर्फेसेस के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, एंड देन वील जस्ट सिंपली सॉल्व देम टुगेदर। देख रहे हैं हम कि हमारी वोकैबुलरी किस लेवल पे पहुंची, बट अगेन उससे ज़्यादा देखिए 20% हम टेस्ट करेंगे अपने आप को, 80% नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ उस माइंडसेट से बैठना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट या बहुत ज़्यादा खुशी मत इसकी का इजहार मत करना। बेसिकली इट्स सिंपली दैट यू वी आर गोइंग टू बी लर्निंग थ्रू making context or creating context through these questions. So let us begin with the first set of questions. Like I said, I'll try to keep as much as possible within context ताकि तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़े, रीडिंग के ऊपर बेस्ड vocabulary सॉल्व करो। But then there might be a couple of situations जहाँ पे मैं तुमसे direct question भी पूछता हूँ। But then let's begin with something simple this time. All right, I hope this is visible. All right, you have two questions on the screen. क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे जल्दी से। मैं मिनिमम से मिनिमम हेल्प करने की कोशिश करूंगा तुमको आज। So the hail dashed the cornfield until the entire crop was lost. Belittled, pummeled, rebuked, commended. मैंने क्या बोला इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? बिल्कुल देखो, टेस्ट के लिए तुम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मेरी बात फिर से सुनो, तुम्हारे टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली इन क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि दीज क्वेश्चंस गिव अस सम हुक इनटू आवर मेमोरी, जिससे कि वो वर्ड तुम्हारी मेमोरी के ऊपर लैच ऑन कर सके, यानी कि वो तुम्हारी मेमोरी में चिपक सके। उसके लिए तुम्हें कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। वर्ड्स को रैंडमली अगर तुम रटते रहोगे, दे सिंपली तुम्हें समझ में आते हैं, वो अंदर चले भी जाते हैं, एब्जॉर्ब भी कर लेते हो, लेकिन उसके अंदर रिटेंशन नहीं होता है, एंड उसके अंदर रिकॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता। यू आरंट एबल टू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी एग्जामिनेशन में जरूर experience किया होगा that you learned a couple of words and then they appear in the examination and then you kind of want to pull your hair out when you're getting mad क्योंकि तुमको क्वेश्चन, तुम्हें वर्ड पहचान में आ रहा है लेकिन तुम्हें उसका मीनिंग याद नहीं आ रहा है, एंड दैट इज रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग। सो दैट हैपेंस व्हेन तुम विदाउट कोई कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी हुक के, बिना किसी स्टोरी के, यू आर ट्राइंग टू जस्ट क्रैम द वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग आफ्टर वर्ड मीनिंग। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेल किस चीज को बोलते हैं? ओला वर्षा जो होती है, ओले गिरते हैं ना, उसको हेल बोलते हैं। हेल स्टॉर्म is like a storm where there's a lot of hail. So hail dashed the cornfield until the entire crop was lost. तो belittle का मतलब क्या होता है? As I said, मैंने बोला बिल्कुल खुल के, बिंदास होके, फुल चीटिंग करके क्वेश्चन सॉल्व करो। डिक्शनरी में देखो, ये वाला एक्सपीरियंस तुमको ही याद रहेगा। belittle का मतलब होता है किसी की ओवरऑल स्टैंडिंग, कॉज टू सीम लेस सीरियस, किसी की सीरियसनेस को कम कर देना, किसी चीज की सीरियसनेस को कम कर देना। अनदर एक्सप्रेशन वुड बी टू प्ले समथिंग डाउन, किसी चीज का नेगेटिव ओपिनियन रखना, यानी कि ओवरऑल उसकी रेपुटेशन बिगाड़ने की कोशिश करना, उसकी वर्थ
कम करने की कोशिश करना, उसको अपनी एक्चुअल वैल्यू से इन ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट बताने की कोशिश करना, दैट इज टू बिलिटल. So I don't think the crop was to insult the cornfield. So this is not the answer. Pummel. मुझे जो इसका आई कैन शो यू द मीनिंग, लेकिन मुझे इसका एक मीनिंग याद आ रहा है. जो तलवार होती है ना, सोल्ड, उसका जो हैंडल होता है, उसके हैंडल के नीचे एक छोटा सा ग्लोब टाइप का होता है, जैसे तुम्हारे गियर शिफ्टर के एंड के ऊपर होता है. देयर इज दिस लाइक बॉल एट द एंड इन अ कार, एंड दैट इज कॉल्ड पॉमल बिकॉज जब कोई बहुत ज्यादा पास आ जाता है, दैट्स लाइक द sword इज यूज्ड इन द अदर डायरेक्शन, दूसरे एंड से उसको क्या बोलते हैं, यू काइंड ऑफ pommel it on the head and on the head of your enemy. That is called pommel. Pommel एक्शन करने को भी, किसी चीज को इतनी जोर से मारना दैट उसका शेप बिगड़ जाए, या उसको टू केव समथिंग इन, कि वो टूट के अंदर चली जाए, दैट इज कॉल्ड टू पमल. और दैट इज द वर्ड दैट अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका वर्ब फॉर्म मिल जाएगा. Strike usually with a fist or something like a fist. So that is to pummel. But क्या हेल के साथ पमल हो सकता है? यस, कॉर्नफील्ड की पूरी को डिस्ट्रॉय करने के मीनिंग में यूज किया गया है. तो पमल लुक्स वेरी क्लोज टू द वर्ड दैट आई एम लुकिंग फॉर, बट आई सिंपली सस्पेंडेड, क्योंकि मैंने अभी बाकी दोनों वर्ड्स के बारे में बात नहीं की है. व्हाट डज रिब्यूक मीन? सेंशर सिवियरली और एंग्रीली, किसी चीज की को क्रिटिसाइज करना, दैट इज टू सेंशर बहुत सेवियरली, या एंग्रीली किसी चीज को सेंशर करना, क्रिटिसाइज करना, दैट इज टू रिब्यूक. ऑब्वियसली दैट मीनिंग डज नॉट अप्लाई हियर. व्हाट अबाउट कमेंडेड? कमेंडेड का मतलब होता है तारीफ करना, किसी तरह से इनकरेज करना, अपहोल्ड करना, express approval of. You want, when you say that you approve of something, you like something, you find it worthy of regard, kindness or confidence, that is called to commend. So even that is not the meaning because ये तो positive चला गया. So we were right, pummeled was the answer to the question. The hail dash the cornfield, so the hail pummeled the cornfield until the entire crop was lost. Fine. The next question. The Earth Day committee leader placed large garbage bins in the park to dash Saturday's cleanup. Again, the Earth Day committee, okay, that's the subject of the sentence. Leader is the subject, placed large garbage bins in the park to dash Saturday's cleanup. टू के कॉम्बिनेशन, अपनी ग्रामर की नॉलेज को आई होप यूज कर रहे हो साथ में. टू प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होता है, जिसको क्या बोला जाता है? इन्फिनेटिव बोला जाता है. ओके, तो आई एम लुकिंग बेसिकली फॉर something that fits as an infinitive here. To confound, to pacify, to integrate, to facilitate. Confound करने का मतलब क्या होता है? किसी को बहुत बुरी तरह से confuse कर देना is to confound. To completely make them lose where they are or who they are. Confuse or leave at a loss because of something complex or difficult to understand. बहुत ही ज़्यादा challenging to understand situation अगर किसी के सामने आ जाए तो that's basically confounded. Okay, pacify का मतलब क्या होता है? बहलाना in a sense, cause to be more favorably inclined, gain the goodwill of. pacifier तुमने सुना होगा शायद, वो झुंझुना होता है ना जो, या फिर वो जो there's like this setup, there's this rubber nipple जिसके अंदर honey होता है, and you kind of put it in the mouths of the children when they're crying or giving you a lot of trouble. Even that is called a pacifier because वो pacify कर देता है. इसके साइड में तुम्हें एक साइड बिट और बता दूं, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में भी यही डिफरेंस है. पैसिफिक ओशन को पैसिफिक बोला इसीलिए जाता है बिकॉज इट इज काम, इट इज कंपोज्ड, इट इज नॉट वेरी वायलेंट. अटलांटिक ओशन ऑन द अदर हैंड इज वेरी वेरी वायलेंट, इट हैज अ वेरी वायलेंट हिस्ट्री. तुमने शायद एल्डोराडो के बारे में सुना होगा, द लेजेंडरी सिटी ऑफ गोल्ड. द लेजेंड इज कि वो भी अटलांटिक ओशन के अंदर कहीं पे बेरीड है. So Pacific Ocean को भी Pacific इसीलिए बोला जाता है because it has the sense of pacifying people. It lulls the sailors into sleep. That's how the legend goes. Integrate कि यानी कि मिला लेना, किसी चीज में accommodate कर लेना. Facilitate करने का मतलब क्या होता है? To make something easier for somebody. So you remain at a place, maybe you are at a hotel or you basically at your own home and you like you are attending guests and you're entertaining guests and you're making things easy for them. Maybe you're in an examination hall acting as the invigilator, making the examination process easy for the examiners. That is called facilitating. So इनमें से कौन सा फिट होगा? कॉन्टेक्स्ट तो बहुत दूर का है, बहुत सीधे सीधे आंसर भी नहीं मिल रहा है, बट देन आंसर होना तो चाहिए इन चारों में से कोई. So confound is to confuse, pacify is to calm something down,
इंटीग्रेट का मतलब होता है अपने साथ मिला लेना, इंटीग्रेट कर लेना। तुम क्या कोशिश करोगे? गार्बेज बिन्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि कंफ्यूज किया जा सके, ताकि पैसिफाई किया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके, या फैसिलिटेट किया जा सके। फैसिलिटेट सैटरडेज क्लीनअप, सैटरडे के क्लीनअप को हेल्प किया जा सके, उसको और ज्यादा पुश किया जा सके, उसको इजी बनाया जा सके। दैट इज द वर्ड दैट यू लुकिंग फॉर, एंड हेंस द आंसर हियर इज डी। आई होप इट्स क्लियर। चलो डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस उठाते हैं। All right, the next set of questions. I hope they're visible on your screen. The 6 questions in all. तुम खुद figure out करो इसमें क्या करना है. Every question is a set of 2 sentences, right? Is a pair of sentences. And while one of the words in the above sentences has been emboldened, it has been made bold, there's a blank in the second sentence. तो करना actually में ये है that motivate. Again तुम देख पा रहे हो वहाँ पे verb, sorry, 2 plus verb का combination, that's a verb, right? The company tried to motivate its employees. अब इसी चीज को एक different तरीके से बोला गया है. Can you look? The company tried to increase its employees dash by promising bonus payments की बात भी यहाँ पे भी की गई थी. लेकिन अब जो वर्ड है motivate, which was a verb originally, मुझे इसका noun form चाहिए. So to motivate का noun form क्या होता है? The company tried to increase its employees motivation. तुम्हें पता है कि motivate is a word जिसका noun form मुझे चाहिए, तो मुझे motivation करना पड़ता है. So the company tried to increase its employees motivation by promising bonus payments. What about the other questions? Can you solve them now? How are the jobs in this organization classified? How are the jobs in this organization classified? किस तरह से classify की जाती हैं, किस तरह से categorize की जाती हैं, किस तरह से अलग अलग parts में या अलग अलग compartments में, अलग अलग categories में उनको तोड़ा जाता है. अब यहाँ पे classified, again, how are they classified? Passive form में third form of the verb use हुआ है. क्लासिफाइड का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे. आई होप ये देखो, ग्रामर सॉल्व करने से, ग्रामर की नॉलेज होने से ये होता है, तुम इमीडिएटली एज इफ like Iron Man or like the Terminator, you have the analytics point of view of the sentence in front of you immediately. तुम्हारे सामने जो sentence आया, instead of like getting confused and banging your head here and there, immediately उसके जो special statistics हैं, जो उसका vital statistics है, वो तुम्हारे सामने खुल के आ जाता है कि sentence क्या है, कितने पार्ट्स में टूटा हुआ है, एक्टिव है या पैसिव वॉइस है, इसके अंदर वर्ब के कौन से फॉर्म्स यूज हुए, मेन सब्जेक्ट क्या है एंड मेन वर्ब क्या है. दिस इज लाइक योर साइड अलोंग एनालिटिक्स, जो कि तुमको बहुत मदद करता है तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन में. व्हाट आर द जॉब डैश इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? क्लासिफाइड का नाउन फॉर्म चाहिए मुझे. हाउ कैन यू मेक क्लासिफाइड का नाउन फॉर्म? इट्स क्लासिफिकेशन, राइट? So what are the job classification? R लिखा है ना, तो classifications हो जाएगा. What are the job classifications in this organization? All right. So they argued about the price. The next set of sentences. They argued about the price. Simple second form में verb है. Simple past का sentence है. They had. ये भी simple past का sentence है. इसके मुझे argued का noun form चाहिए. Argued का noun form होता है argumentation. और argument. They had an argument about the price. Argumentation कैसे यूज होता है? Argumentation is the process through which तुम अलग अलग arguments देते हो. Let me use the two words in a sentence so that you can clear that up. इसके लिए तो तुम्हारे पास sentence है. They had an argument. जब दो लोग मिलके एक दूसरे आर्ग्यू कर रहे हैं, उसको बोलते हैं it's an argument. We had an argument. We had an argument in the morning. We were arguing and we had an argument. लेकिन argumentation इस तरह से यूज होगा.
The argumentation used in this research paper makes a lot of assumptions. यानी कि बहुत सारी चीजें अज्यूम करके उनकी एक्चुअल वैल्यू ना पता होने के बावजूद, एम्पेरिकल वैल्यूज पता होने के ना बावजूद, अपनी मर्जी से कुछ भी अजम्पशंस लेके इस आर्ग्यूमेंटेशन को प्रेजेंट किया जा रहा है. सो आर्ग्यूमेंटेशन को का मीनिंग यहाँ पे क्या है? द वे और द प्रोसेस और द स्टाइल or the arrangement in which arguments, which are basically just things to prove your point, have been given. So argumentation is the bigger process जिसमें तुम argue one like ज़्यादा formalized process होता है. Argument however is like लड़ाई झगड़े को भी argument बोल सकते हो. An altercation can also be called an argument. My secretary leaves us next week, so we will need someone to replace her. Someone to replace, again infinitive है. My secretary leaves us next week, so we'll need to find a dash for her. अब अ लगा दिया, immediately साइन क्या हो जाता है? मिल जाता है. अ किसके पहले लगता है? नाउन के पहले, राइट? सो रिप्लेस का नाउन फॉर्म क्या होता है? A replacement. My secretary leaves us next week, so we'll need to find a replacement for her. I hope it is clear. The personnel नहीं है वो, ठीक है? The personnel director has to sign, again infinitive है, to sign the contract of employment. The personnel director's dash has to go on the contract of employment. अब यहाँ पे क्या लगाओगे? Sign, to sign का noun form होता है signature. The personnel director's signature has to go on the contract of employment. We have agreed the terms of contract, or we have agreed to the terms. This is like more American English. Please इसको इस तरह से use मत करना. We have agreed the terms of contract is British style of writing के हिसाब से गलत हो जाएगा. They should have written we have agreed to the terms of the contract. We have come to an, अब agree करने के साथ का noun form क्या होता है? Agreement. ये तो बहुत सिंपल था, राइट? We have come to an agreement. An agreement, again, the first sign that you should be looking for, the analytics of grammar that helps you in forming arguments. मैंने बहुत शुरू से बोला है, and that is like the moment of truth for those people who just keep on banging their heads कि इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. Alright, he told us that he had been promoted for salesman to sales manager. He had been promoted again. Past perfect का passive form है ये. He told us about his promotion. Promoted का noun form क्या हो जाएगा? Promotion. He told us about his promotion from salesman to sales manager. Word forms के questions थे. I hope इससे कुछ रिवाइज हुआ होगा. Okay, another set of questions, another probably bone of contention with a lot of learners is where you form opposites by putting prefixes before a particular word. जैसे कोई adjective है, for example direct, उसको अगर मुझे opposite बनाना है तो मुझे उसके पहले prefix लगाना पड़ेगा क्या? Undirect या disdirect या misdirect, मे बी misdirect, लेकिन वो direct opposite नहीं है. What is the direct opposite of direct? It's indirect. एंड ये वाली चीज सिलेक्ट करना जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनके लिए बहुत नेचुरल होती है कि कब इन लगेगा कब अन लगेगा, लेकिन हम यही सोचते रहते हैं कि हम पता नहीं हम क्यों नहीं समझ पाते और क्यों नहीं कर पाते इस चीज को सॉल्व हमेशा. सो लेट्स हैव अ लिटिल एक्सरसाइज विद दैट. I hope this is properly and thoroughly visible. All right.
So the manager's treatment of the clerk was fair and completely justified. अब मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम क्या क्या यूज कर सकते हो. So all right, I'll write it here. Either you can use a dis एज अ प्रीफिक्स बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ प्रीफिक्स की बात हो रही है, सफिक्सेस की बात नहीं हो रही है. You can use an il, you can use an im, you can use an in, that is in, you can use ir, or you can use un or un. या तो डिस लगा सकते हो, इल लगा सकते हो, इम लगा सकते हो, इन लगा सकते हो, एर लगा सकते हो, अन लगा सकते हो. अब इसमें से मुझे जरा देख के बताओ कि कौन कौन से चीज के साथ क्या यूज होगा. इनके कोई रूल्स नहीं होते हैं. इट्स बेसिकली जस्ट यूजेज एंड द साउंड, वट एवर इज द मोस्ट कन्वीनियंट टू स्पीक आउट. हमारे लिए सभी मुश्किल है, तो हम उसके अंदर वो सटलिटी समझ नहीं पाते कब वो ज्यादा थोड़ा सा जरा सा ईजी है. Let's begin. The manager's treatment of the clerk was fair and completely justified. Fair, justified, दोनों के दोनों adjectives हैं. Fair का opposite बनाना है मुझे. इनमें से क्या put करोगे? Is it going to be disfair, ill-fair, unfair, unfair? अजीब लग रहा होगा सुन के, लेकिन ध्यान रखना अपना सिर्फ कान या तुम्हारा ear should not be your only argument. If confused, go and check the dictionary right away. Unfair. What about justified? Injustified, unjustified. I am a little confused. मुझे डिक्शनरी देखने की जरूरत पड़ेगी. तो मुझे जो सबसे ज्यादा क्लोज कंटेंडर्स लग रहे हैं मैं उनको आई पुट इट एज अ वर्ड. सो आई से इनजस्टिफाइड. आई होप दिस इज विजिबल टू यू गाइस. नॉट फाउंड. ओके. इनजस्टिफाइड. आई एम injustified is also not found. Maybe it's unjustified with a un. Yes, now I found the word. Lacking justification or authorization. So the word should be so the manager's treatment of the clerk was unfair and completely unjustified. Efficient workers waste raw materials and fail to complete tasks on schedule. Efficient workers waste raw materials. गड़बड़ है ना. If they are efficient, why would they waste raw materials and fail to complete tasks on schedule? If they were efficient, they would be able to do stuff in a smaller amount of raw material, and not only that, they will also complete the tasks on schedule. So efficient के लिए disefficient, ill-efficient, inefficient या inefficient. Yes, that's right. That's the word that you're looking for. Inefficient. Her views and those of the department manager were compatible. Compatible, discompatible, ill-compatible, incompatible, incompatible. Again, you have another in. The company was criticized for operating with adequate cover. Adequate का मतलब होता है sufficient, something that covers you, as the sentence says itself. So adequate का इसके साथ क्या होगा? Unadequate, inadequate, inadequate. Again, I have another in. Whenever confused, तुम्हें सुनाई मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें, we often judge by the sound of the word. We as the second speakers of the language, यानी कि हमारी second language English है, shouldn't do that. हमारे आसपास का जो डिस्कोर्स है वो सब सही बोलने वाले लोगों का नहीं है. So it could be that we've been listening to people speak wrong, and that happens all the time. It could be that we speak throughout our lives, hear people say wrong things, and automatically that becomes a part of our system, and हम उसी को ठीक समझने लगते हैं और उसी को जज करते हैं that is जैसी साउंड नहीं है, even if it is like it is unnatural to the native speaker. You should not be trying to do that. सिर्फ अपने कान पे या the sound of the word उस पर rely मत करना. Always and always use the dictionary whenever you confused. This वो अलग बात है कि confusion ही नहीं है, you're like damn sure कि ये तो सही है and still you are wrong. That probably would be like 1 out of say 9 cases, so that's fine. This procedure is highly regular and you mustn't do it again. This procedure is highly regular. Regular के लिए क्या लगाओगे? Irregular. The job offer was conditional. Conditional का opposite कैसे बनता है?
by putting a UN before it. Before it. Unconditional is the word. She seems to be capable of arriving on time. Capable, discapable, ill-capable, incapable, incapable again. The strike was official. Just give me a second, okay? Hi, Mansi. What are you suggesting? Promotion, promotion, where was promotion? Okay, I think मैंने मिस कर दिया यार तेरा comment किस चीज पे बोल रही थी तू. So kind of let me know if it was important. The strike was official and according to the management it was also legal. Official and legal. इनके opposites बताओगे? Official का opposite बनता है UN लगाने से unofficial. I'm right, right? Also, legal का opposite कैसे बनता है by putting an IL before it. So it is illegal. He's too decisive to be a good manager. Too decisive. Too decisive तो अच्छा ही manager होता है. Obviously sentence does not make sense unless you put the opposite of this word. So decisive का the opposite is found by putting an IN before it and the word is indecisive. तुम अगर वंडर कर रहे हो कि मुझे ये कैसे अकर कर रहे हैं वन आफ्टर द अदर विदाउट इवन थिंकिंग, दैट इज बेसिकली माय एक्सपीरियंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. मैंने जितना पढ़ा है उससे आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ फाइंड कंपैटिबिलिटी विद इन माई इनर ईयर. But that is not just based on what I listen to, it is based on also what I've like been learning throughout these years. So जब भी मैं आज भी जब मैं कंफ्यूज होता हूँ, I do not shy out of going and looking up a dictionary. ये आदत तो थोड़ी थोड़ी it is kind of starting to die down now. Nobody wants to open a dictionary. Fine, you don't want to open a hard copy dictionary, लेकिन क्योंकि तुम organized effort लगा रहे हो एक competitive examination solve करने के लिए, तो a dictionary even if it's in the soft form needs to be your regular companion. So the debt is recoverable. So we have decided to write it off. जो debt है वो recoverable नहीं है. यानी कि एक कंपनी कभी ये डिसाइड करती है कि हमने जो उधार दिया था वो वापस नहीं आएगा. So you now have to show it as your loss. So that is how you write it off. Recoverable, unrecoverable, irrecoverable. अब मैं confused हूँ, really confused हूँ. So I'll first go for irrecoverable. Oh, I found the right word. Incapable of being recovered or regained. All right. You are eligible for paid sick leave until you have worked here for 3 months. You are eligible for paid sick leave until you have worked here for 3 months. Eligible तो नहीं हो सकता. वो ये बोल रहा है until लगा है, जब तक कि तुम यहाँ पे 3 महीने काम नहीं कर सको कर लो. Paid sick leaves तुम्हें नहीं मिलने वाली हैं, तो eligible is obviously the wrong word there. See, this is what we are trying to do. We are trying to create context, little context, जिसके बेसिस के ऊपर तुम्हें you won't even realize पता नहीं क्या तुम्हारी मेमोरी में हमेशा के लिए बैठ जाए. सो यू आर एलिजिबल फॉर पेड सिक लीव अंटिल इज अ रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट. एलिजिबल का उल्टा यूज करना पड़ेगा मुझे. एलिजिबल का उल्टा होता है इन एलिजिबल. आई होप आई एम राइट. आई एम अफ्रेड वी आर रादर सेटिस्फाइड विद योर वर्क. आई एम अफ्रेड वी आर रादर सेटिस्फाइड विद योर वर्क. सेटिस्फाइड, अफ्रेड तो नहीं बोलेगा फिर इंसान. एट वी आर सेटिस्फाइड. आई एम अफ्रेड इज एन एक्सप्रेशन जो कि जब आप किसी से डिफरेंशिएट कर रहे होते हो, उससे कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने प्रेजेंट कर रहे होते हो, या सिंपली आप ये बताना चाहते हो कि व्हाट्स हैपनिंग इज समथिंग दैट यू डोंट लाइक, आप बोलते हो आई एम अफ्रेड. सो आई एम अफ्रेड वी आर रादर डिससैटिस्फाइड विद योर वर्क.
What about the last one? The negotiating team was quite experienced in dealing with management negotiators. अब इस सेंटेंस से कुछ सीधा सीधा निकल के नहीं आ रहा है. But then the extension or the first instruction that was given was कि in words को you have to turn it into their antonyms by adding those prefixes before them. The negotiating team was quite experienced. Sorry. अरे Okay, the next set of questions. Let's see how many of these you'll be able to figure out. I hope तुम देखते से ही समझ जाओगे कि ये क्या है. So a sentence is given, a part of this sentence has been emboldened, made bold, and obviously उस bold वाले part के लिए replacement ढूंढना है, explaining the meanings. So सिर्फ difference यहाँ पे आता है कि तुम इसको literally decode करोगे या फिर these will be decoded in a different way, यानी कि non literal तरीके से. मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, otherwise तुम समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ. So if I say the neighbor had to pay through his nose for a brand new car, what you're basically saying is यहाँ पे literal meaning लूँ that he paid through his nose actually, however that happens. मैं उसको like conceive तो नहीं कर पा रहा हूँ उस idea को, लेकिन is it supposed to be literal? No, these are not supposed to be literal. These are supposed to be metaphorically taken, hence they're called idioms. क्योंकि ये मुहावरे होते हैं, बोला कुछ जाता है लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है. सो द नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज, लिटरल मीनिंग इज लाइक समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. ये उसका लिटरल मीनिंग तो नहीं निकलेगा, ये मेटाफोरिकल मीनिंग निकलेगा. सो टेक ह्यूज लोन्स, इज दैट द मीनिंग? पे अ रीजनेबल प्राइस. Reasonable price would not be that inconvenient, you as if you feel that you're paying through your nose. Pay an extremely high price. Yes, it's difficult to pay, right? Had you been, just imagine a situation कि कहाँ कहीं पे किसी के को फोर्स किया जा रहा है to make them really pay through their nose. What happens? It is an extremely difficult thing to do, and hence paying extremely high price is the correct version of the meaning of this idiom used here. Make a quick buck, जल्दी से पैसा कमा लेना, is not. So this is not the answer. B is not the answer. Even A is not the answer. The answer is C. If he phones again, I'm going to give him a piece of my mind. So are you really going to cut off a chunk of your mind and give it to some person? I hope you've not been doing that for a long time. Otherwise, there would be no mind of your own left, because you've been giving away too many pieces to too many people. To be nice to him, is it to piece of my mind is good? Does it sound like, does the tone of the sentence sound like okay, you're going to be nice to him? No. He kind of, the sentence comes across as aggressive and even belligerent. To take advantage of him, I'm going to take advantage of him does not, it's a vague meaning. What does that mean? To reprimand, डांट देना, scold कर देना, to tell somebody off, to lay off somebody off. That kind of sounds like a good replacement, but let me, yes, to support him is again wrong because it is too positive. Yes, I just found the answer. The answer is C.
to give the game away, to lose the game, to give a walkover in a game, to reveal the secret, to play the game badly, to give the game away. यहाँ पे what does it, okay, let me use this in a sentence, okay? They haven't let me. Your body language is going to give the game away to everyone. इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से तुमको सब कुछ समझ, लोगों को सब समझ में आ जाएगा व्हाट आर यू अप टू. So यहाँ पे it has nothing to do with an actual game. So all those options that are revolving around the word game do not apply. To lose the game, definitely not. To give a walkover in a game sounds very, very close to the original meaning, but still not. To play the game badly, as I said, anything to do with the actual word game is not the meaning. To reveal the secret is the word, or is the meaning of this particular idiom. To cool one's heels. To cool one's heels. To close the chapter, to walk on the heels, to kick someone with the heels, to wait and rest for some time. What does it mean? Again, literal translations या literal connections नहीं देखने हमें. To close the chapter, maybe that's the meaning, because it does not talk about anything with about heels. What about the next one? To walk on the heels. As I said, heels से related literally कुछ भी नहीं लेना है. Okay, so to kick someone with the heels, again, these three meaning do not apply. To cool one's heel का मतलब होता है that somebody is making you wait and you decide to rest for some time. तुम भी पेशेंटली बैठ के उसके नेक्स्ट एक्शन का इंतजार जब करते हो, to you are actually waiting for a response from the other side. It could be like in a chess match where you've made your move and the other person is like wondering very, very um closely, and he's taking a lot of time, so he is basically making you cool your heels. So even you cool your heels by waiting and resting until the time he makes his move. So the answer here is D. To bury the hatchet. Bury the hatchet. Hatchet बोलते हैं छोटी कुल्हाड़ी को. Okay, and just the throwing axe that the Red Indians used to use, Native Americans, to fight with the hatchet, to forget the enemy, to bury the treasure underground, to pick up enmity. Okay, to fight with a hatchet, मैंने जैसे जब ज्यादातर बोला है idioms में indirect meaning वाला meaning तो almost cancel ही हो जाता है. So anything to do with the hatchet is symbolic here. Any transfer of the same word or any of those words in an idiom into the meaning is very sure ground for you to reject that option. बात समझ में आई? इस idiom, ओरिजिनल idiom का एक वर्ड या कोई भी वर्ड या मोर देन वन वर्ड अगर किसी मीनिंग के अंदर डायरेक्टली अपीयर कर रहा है, so 9 out of 10 times the answer is going to be not that option, यानी कि उसको तुम easily reject कर सकते हो. Alright, to forget the enmity is, देखो bury the hatchet is अब जरूरत नहीं है उसकी. When there was like the legend could be something like that कि जब दो tribes आपस में लड़ रही होती हैं तो they have their hatchets and then they would probably, I don't know, it could be that when they find truce or they hit truce, जब आपस में उनके सुलह हो जाती है, so they actually as a ceremony bury all the hatchets so that दोनों एक दूसरे के बारे में safe feel कर सके. So it could be like a ceremony in those times in one of the cultures that we keep hearing about. To forget the enmity is probably the answer. To bury the treasure underground, no. To pick up enmity, no. It is basically to forget the enmity. सारी अब वो होते हैं ना कि लड़ाई खत्म कर दी हमने, सुलह हो गई, now we've buried the hatchet.
Okay, let's make the context bigger this time. Okay, so there are as many types of business. अच्छा, sorry, I'm so sorry. I should have explained the question. देखो तुम्हारे सामने एक छोटा सा पैसेज है, maybe few sentences, and उसके ऊपर कुछ words तुम देख रहे होगे कि they have been italicized. Atmosphere, quirky, and behemoth. So there are as many types of business correspondence as there are kinds of corporate atmospheres. Office environments come in all sizes and can be ordinary and traditional or quirky entrepreneurial offices. Some of them actually started in garages. Other can be formal multinational behemoths. चलो अब इनके ऊपर based कुछ words के बारे में questions हैं. So what is the meaning of the word atmospheres as it is used in the passage? Commodities, ambience, elements, resources. एक बार फिर से जाके context देखते हैं. There are as many types of business correspondence as there are types of corporate atmosphere. जितने तरह के corporate atmosphere होते हैं उतनी तरह के business correspondences भी हो सकते हैं. So क्या आएगा यहाँ पे? एटमॉस्फेयर्स को किस तरह से यूज किया गया है? कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर जितने तरह की होती है उतने ही तरह के करस्पॉन्डेंस भी हो सकते हैं. सो एक एक वर्ड पुट करके देख लेते हैं. दैट इज द इजीएस्ट मेथड. सो लेट्स पुट ईच ऑफ दीज वर्ड्स इन द blank. Let's imagine a blank जहाँ पे word atmospheres था, and let's try to put. Okay, so what is the meaning of the word atmosphere as it is used in the sentence? So there are as many types of business correspondence as there are kind of corporate commodities. Does it fit? I don't know. I kind of feel as if it is a vague meaning. There are as many types of business correspondence as there are kinds of corporate ambience. Ambience किसको बोलते हैं? Ambience is like the look and feel of something. A particular environment or surrounding influence. Maybe this fits the meaning, but I'm still waiting for something else. There are as many types of business correspondences as there are kind of corporate atmospheres. Atmospheres के लिए क्या elements put किया जा सकता है? Corporate elements so things that make up that corporation. So I don't think that fits again. Resources. So there are as many types of business correspondence as there are types of corporate resources. Corporate resources again मुझे blank type का लगता है, vague type का लगता है. The answer is ambience. जितने अलग अलग तरह के environment होते हैं corporate atmospheres environments, उसी तरह के उतने ही तरह के correspondences भी हो सकते हैं. And what's the next sentence? Or rather the next question. What is the meaning of the word quirky as it is used in the passage? सेंटेंस के अंदर पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है. अगर तुम उसको इतना ज्यादा पेनिट्रेटिंगली समझ सकते हो तो you'll find कि तुम डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी एक्सप्लेन कर पाओगे. ऑफिस environments come in all sizes and can be ordinary and traditional. Ordinary and traditional. और किस लिए यूज किया जाता है? Different entity which is like different from the first one, definitely disjointed from the first one. Either you can have an apple or an orange. So an orange is definitely nothing that you can confuse with an apple, or an apple is nothing that you can confuse with an orange. Two happen to have a very different existence, a very different kind of appearance. So what is the meaning of the word quirky? शुरू में ordinary और traditional use किया है, उसका उल्टा होगा ना quirky. Anything that is inordinary या extraordinary या something that is like removed from what is generally considered ordinary. यानी अजीब सा, that is like strange, peculiar. Let's see if you find something like that. Idiosyncratic. Idiosyncratic का मतलब क्या होता है? Something that has a in a way it's like हर किसी की एक characteristic सनक होती है. Every one of us has a different kind of a bent towards strangeness. अजीब अजीब सी आदतें होती हैं. कोई सुबह नींद में बात करता है तो कोई आई डोंट नो खाने के पहले
मिठाई खाता है, something of that sort. It's, I don't know, it's like I don't have a very good example, but you got my point. Idiosyncratic is probably the meaning but doesn't fit here. Individual eccentricism के बारे में बात नहीं की जा रही. What is the meaning of the word quirky? इस तरह से क्या engaging हो सकता है? Does engaging fit? यार ordinary और traditional का उल्टा engaging कैसे हो सकता है? So these are not the answers. Quaint, yes, that is the answer. Quaint is like strangely good. Something which is like very difficult to explain in the usual terms, conventional terms, but is something that comes across as likable, something that you're still interested in, something still intriguing to you. So yes, that kind of sounds like the answer. But exceptional, again, ordinary और traditional का उल्टा exceptional entrepreneurial offices, क्या ये fit हो सकता है यहाँ पे? Exceptional is an extremely positive word. इसका मतलब ये है, it's like very very good. Unless उसके आगे उसको adverb की तरह यूज करके आगे adjective यूज किया जा सके, जैसे he is exceptionally bad at mathematics, तब वो exceptionally negative की तरह भी वो, क्योंकि अब सिर्फ intensifier की तरह यूज किया जा रहा है. So इसलिए अब लेकिन as an adjective exceptional is considered a good, a positive word. एंड यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी और ट्रेडिशनल का ऑपोजिट चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि इट्स ऑलरेडी सेइंग, द ऑथर इज सेइंग दैट ऑर्डिनरी एंड ट्रेडिशनल इज बैड, सो एक्सेप्शनल कम्स इन एज द गुड थिंग दैट द पिक्चर रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट आउट. The answer here is quaint, something which is strange but it still kind of does the job. Which of the following words is a synonym for the behemoth? Listen to the pronunciations well and try to kind of learn them. उससे तुम words के बीच में differentiation करना सीखोगे, तुम्हें meaning भी ज़्यादा याद रहेगा. Which of the following word is the synonym for behemoth? Conglomerate, millionaire, scandal, chain. Behemoth का मतलब होता है something which is extremely big, giant. So conglomerate is that fits the context. याद है original sentence पढ़ा था? It said, और quirky entrepreneurial offices, some of them actually started in garages. कुछ इतने छोटे हैं कि गराज में स्टार्ट हुए थे. Others can be formal multinational behemoths. यहाँ पे behemoths का क्या मतलब है? Conglomerate, which is like, conglomerate का मतलब क्या होता है? A lot of companies and different components of subsidiaries working together towards one goal. कॉर्पोरेशन के लिए, एक बहुत बड़े कॉर्पोरेशन के लिए, जहाँ पे अलग अलग बिजनेस, अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स करके बिजनेस कैरी आउट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ग्लोमरेट. आई होप यू गॉट द आंसर. कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी तुमको वोकैबुलरी में इम्प्रूव करने में बहुत तेजी से मदद करेगी, बिकॉज विदाउट कॉन्टेक्स्ट हमें वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, और ऑन दी अदर हैंड हमें एक बार अगर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लें तो दोज वर्ड्स स्टिक विद योर मेमोरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. I hope this exercise was helpful for you. ये ऑल इंडिया मेगा क्लैट मॉक टेस्ट प्लीज याद रखना, जनवरी 30th को इट हैपेंस एट 2 PM. इस तरह के सारे टेस्ट्स का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करो, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेस्टिंग योरसेल्फ, बट देन टू get your hands on that document जिसके अंदर इतने सारे questions हैं, and which would give you a very good practice if you were willing to do that. कुछ बैचेस के बारे में तुम्हें बता दूं. द ऑल स्टेट लॉ एंट्रेंस प्रेप बैच इज इन ऑल English batch and it has already started on January 27th. So get the details and join it if you're interested. Another batch is NLU Alumni Specific batch for 23 aspirants. All English batch starts today, January 28th. ये वीकली और जो फोर्टनाइटली टेस्ट्स हैं, द यूलैट इज 15-day टेस्ट, वीकली T20 इज लाइक हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट हैपन्स एवरी वीक. सो अगेन इन टेस्ट्स को दे विल कीप योर एफर्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड बंडल्ड अप. तुमको डिस्ट्रैक्ट डेविएट नहीं होने देंगे, तुम्हारे प्रिपरेशन को गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे. एंड ओवरऑल सबसे द बेस्ट द पर्क इज दैट ओवरऑल इंडिया से लोग इसमें बैठेंगे तो तुम्हें तुम्हारी नेशनल स्टैंडिंग भी पता चलती रहेगी एवरी वीक और एवरी कपल ऑफ वीक्स. ऑलराइट गाइस, अगर कंटेंट के अंदर कुछ भी इनअप्रोप्रिएट, इनसेंसिटिव, इनएक्यूरेट समझ में आया तो प्लीज इसे रिपोर्ट कर दो. बग्स बाउंटी अलाउज यू स्मॉल प्राइज एवरी टाइम यू फ्लैग समथिंग करेक्टली, एंड फॉर अस द कंटेंट बिकम्स मोर रिफाइंड एंड मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स ऑल सॉर्ट ऑफ लर्नर्स. अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करो, शेयर कर लो. चैनल तो तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा. फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग अ कोर्स. आज शाम 8 बजे से वी आर स्टार्टिंग अ वेरी intense and aggressive course on clearing the doubts around CLAT and अपनी सही practices को किस direction में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किन sources से पढ़ना है. We're going to be discussing that very aggressively, very closely. So be a part of that if you're interested. आज शाम 8 बजे से on the Unacademy learning app.
So I hope this content was helpful for you. I will keep bringing such discussions to you. Have a nice day and please keep safe.